और -10 पे चलते रहता था और वो बहुत मुश्किल था क्योंकि हम तकरीबन एक दो बार -15 भी गया -15 भी गया था और मैं बस बीमार हो गया था। हाँ, ये बीमार हो गए थे, मुझे कुछ वायरल हो गया था, सब एक एक करके they were all falling like dominoes because it was very tough and it was a very grueling shoot but at the end of it वो शूट खत्म करने के बाद एक ऐसी gratifying feeling आई थी कि हमने कुछ मुश्किल किया है और कुछ दिल से ट्राई करने की कोशिश की है एंड आई थिंक विद माथु सर's guidance it felt good and होपफुली आप लोगों को फिल्म देख के वो एक्सपीरियंस वो अनुभव अच्छा लगेगा। वाह क्या बात है। As a brilliant actor, what do you have to say on that? मतलब कोशिश जारी है और अभी सिर्फ आई होप कि ये सिर्फ स्टार्ट है और मैं उठती बैठती जो भी हर वक्त मेरे दिमाग में यही है कि मैं मेरे कला में आगे कैसे बढ़ूँ और मेहनत कैसे करूँ और अपने माँ बाप का नाम कैसे रोशन करूँ और आप सबको ये कैसे महसूस कराऊं कि हाँ इसे जो भी मौके मिले हैं लाइफ में वो इस चीज़ की हकदार है तो वो कोशिश हमेशा जारी रहेगी। It's a very special day and she's done phenomenally well in this film and not just this film. She's grown from film to film and I think this film has brought her closer to peak. I mean, not that this would be an end. I'm sure she'll outgrow the kind of burden that she carries being Sri's daughter. She's going to carve her own niche, which she has begun very well by playing various kind of characters, starting with Dhadak, then Gunjan, then the short film she did. पापा तारीफ बस करो और लगता है जब फादर नहीं पर जो फैक्ट है बोलने में क्या है ठीक है ओके सॉरी मैं ऐसा ही हूँ जो है बोलता हूँ नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा ठीक है जिस दिन तुम बुरा काम करोगे तो तुमको पहले घर पे बोलूंगा और बाद में अगर कोई मीडिया वाले मेरे से पूछेंगे तो उनको भी यही कहूँगा आई एग्री विद यू मीडिया को ही बोलूंगा मैं वेल दिस इज हाउ फादर फील्स एज अ प्रोड्यूसर आई एम डेफिनेटली डिलाइटेड विद द आउटकम ऑफ द फिल्म द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर नेशनल अवार्ड विनर Mathukuti, he's done a brilliant job. He's even taken care of minutest detail in every aspect. Right. Whether it is performance, whether it is set, whether it is music, whether it is writing, whether it is locations. It's his brilliance which will be seen on screen. And of course, he's complemented by Rahman Saab, by Javed Akhtar's magical writings. And not to forget the actors. She's had. I mean, Janvi is lucky to be blessed to get performers like Manoj to play her real life father. Yeah. And I think seeing him, I somehow somewhere felt that this is how even I would emote. So that's how good he is. Wow. And then acting with Sunny, who's absolutely brilliant in the film, and so the other actors. Even the cop who's there, the senior inspector Sanjay Suri. So there are quite a few. About all this. मैं सबसे पहले तो थैंक्स करूंगा कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी और जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका जो विजन है फिल्म के बारे में इतना क्लियर था कि एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा उसके अंदर मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ फॉलो करना था उनको, उनकी इंस्ट्रक्शंस को। और जानवी का जहाँ तक सवाल है बहुत ही हार्ड वर्किंग और ये मैं श्रेय उनको ही दूंगा कि जनरली क्या होता है कि हम लोग जब ऐसे बड़े स्टार्स के बेटे बेटियों के साथ काम करते हैं तो हमारे अंदर एक हिचक होती है, बट शी वाज सो कूल, शी वाज सो नाइस कि पहले दिन से ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और एकदम बहुत अच्छी केमिस्ट्री हम लोगों की बनी और होपफुली आपको फिल्म के अंदर वो नजर भी आएगी। Thank you so much, sir. Thank you so much. And now project with Janvi, of course, Boni sir, and Madhu sir, Manoj sir, and the entire cast. What do you have to say, sir? देखिए वो एक कहावत है कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल होते हैं लोग, तो मैंने भी उंगली कटाई है, मैंने तो सिर्फ पिक्चर में गाने लिखे हैं और I must say that it's a very powerful, very effective film. It's cold, but when it will be released, it will be hot. और I'll definitely congratulate the director. देख होता क्या है हमारे यहाँ हिंदी पिक्चरों में मेन स्ट्रीम में खास तौर पे
कि हम ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये कर दो, इतना करते हैं कि हम उसको बिल्कुल मेल्ट कर देते हैं कहानी को, उसको एकदम पानी बना देते हैं। लेकिन वो कम लोग होते हैं जिनका हौसला होता है और भरोसा होता है उन्हें अपनी कहानी पे और अपने कैरेक्टर पे कि दे स्टिक टू द मेन लाइन एंड दे डोंट डाइवर्ट. दैट मेक्स द फिल्म पावरफुल. और ये बहुत ही मतलब रिवेटिंग फिल्म है. You just cannot take your eyes away from the screen once it starts. That is the credit to the director. Superb job. So well edited film. And then of course, Janvi is exceptional and so is Pava Saab. ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था. और मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ. मुझे जब बोनी साहब ने बताया कि हम पावा साहब को इस रोल में ले रहे हैं तो मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, ऐसा मत करो. इसलिए कि मैंने उनको देखा था जोया की फिल्म में, दूसरी फिल्म में, वेयर ही हैज प्लेड वेरी लाइट हार्टेड रोल्स एंड ही वाज सो गुड. तुमने भाई यही करते होंगे तो. मगर वो समझ में बात आई कि अगर आप अच्छे सिंगर हैं तो किसी भी सुर में गा लेते हैं. तो उसी तरह से अच्छा एक्टर जो है किसी भी रोल में ढल जाता है. एंड हिज परफॉर्मेंस इज अनबिलीवेबली गुड. तो ये जो इन दोनों की बाप बेटी की फिल्म में जुगलबंदी है वो इट हैज रीच what is considered to be a mirage perfection. It really has reached perfection. Or I'm sure that once you will start watching the film, you will not breathe till the film ends. Thank you so much, sir. तेरे तो जावेद साहब अरे यार बहुत अच्छा एक्टर है. मैंने उसकी हाल में कौन सी पिक्चर देखी थी, आपने जिक्र भी किया उस पिक्चर का. हाँ, इसको याद नहीं, जरा घबरा गया हूँ. मैं सोच रहा था पता नहीं मेरी कौन सी बात बताने वाली है, तो उस नर्वसनेस में मैं नाम भूल गया. इनका भरोसा नहीं भाई. तो उन्होंने कहा yeah, he is a fantastic actor, good choice, very good choice. He'll be the surprise element in the film. तो ये भी एक था छिपा हुआ, मतलब जब जावेद साहब की जो रिएक्शन है, it didn't end with Manoj, it ended with Sunny's casting. AR has really done a great job, great job. चाहे वो गाने हो चाहे उसका बैकग्राउंड हो, तब मालूम होता है जब आप सुनते हैं कि AR रहमान को AR रहमान क्यों कहते हैं. कोई रीजन होगा ना. वो ये. Thank you so much, इस sir. फिल्म का म्यूजिक, इस फिल्म का म्यूजिक, गाने और बैकग्राउंड दोनों. So, जो मैं पूछ रहा था आपसे, we have to talk about these stalwarts, and the response that we've just got. Everybody is talking about this director, the visionary, जिनकी vision हमने यहाँ पे देखी. What do you have to say about all this? I'm really not used to a lot of people. I'm really nervous actually. But it was. It might not be fair to say about my own film, but I can say that we have worked like we have never been lazy a single day. Like that I can promise you. So I hope it translates to a good film. We really hope. As a team, everybody. Bit to your question and perhaps take you to something which has happened in the past. Mother India was a remake of its own version, and Nargis finally went on to bag, all the major awards, and the film went on to become the biggest success. In fact, in the single screen days, whenever a new theatre was to open, they used to open with Mother India because 28 shows houseful was a guarantee. And nowhere in Nargis ji's performance you saw the nuances of Sardar Akhtar, who had done the original Aurat. So it depends entirely on the actor who's doing the present job. And there is no way the influences can interfere with the new actor doing this particular role, which has been done earlier. It's the machinery inside which has got to work. You've got to feel every bit of the character, and that's what is important. What's important is that the character has got to become what the part requires it to become. हाँ, उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे हम देख सकते हैं कि बहुत उम्दा होते जा रहे हैं. हम जानवी को देखते हैं तो श्रीदेवी जी की याद आ ही जाती है डेफिनेटली. व्हाट डू यू फील? मुझे देख के नहीं याद आता. सिर्फ जानवी को देख के याद आता है. आपको तो है, लेकिन हम जानवी में श्रीदेवी जी को ही देखते हैं. इनफैक्ट उतना पोटेंशियल उनमें है. व्हाट हैव यू टू से ऑन दैट? You're asking me? Yes. Well, you see, everybody has a different mechanism to understand a character and to perform accordingly. I wouldn't say perform, to become the part. That was one of the major USP of Sri, and that is another. This is the same thing because perhaps she carried the same DNA,
she also picks up the character, or rather gets into the character and doesn't play the part, becomes a part. And which is why you've seen the growth in the films that she's done so far. Janu, what have you to say? Like, how much you feel yourself, being your mom, उनकी फिल्में आपने देखी होगी. Definitely, we have seen you, like, and she had been so caring about you all, like, the way she used to nurture you all. हमने बहुत देखा है, आपको. I just incidentally, you see, the audience in North India saw Sri after she had done almost 150 to 200 films in South. Yeah. So she had reached a particular level of, understanding what characters are and how each beat has got to be captured or, understood. So she came here after doing 200 films in the South. My baby has just started a journey. So don't put her into any kind of a comparison with any of the, work of her mother. No, as I told you, she also had a journey which was brilliant. She started as a child star, but most of the North Indians saw her after she had done more than 200 films. But she has reached actually, मतलब हम तो बहुत ही मतलब देख रहे हैं उनमें actually मुझे लगा. अच्छा, मुझे पूछना कि कभी ऐसे लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई है जैसे ये कैसी लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन था. It could be anything on the set, could be anything where you remember, it was a very difficult thing. If you would like to share anything on it. एक्चुअली ये शूट के दौरान जब हम फ्रीज़र का पोर्शन शूट कर रहे थे, मैं बहुत ही बीमार पड़ गई थी और काफ़ी दिनों के लिए एक्चुअली मुझे ऐसे लगता था कि मैं होश में नहीं हूँ क्योंकि मैं इतने मेडिसिन ले रही थी एंड we had already gone overboard because the freezer shoot was so tough on so many people, and I just remember that last stretch being very, very mentally and physically exhausting because the way we started playing it, and Mathu sir, you can chip in if you have anything to say also, we would start running really long takes. तो हमने पहले जैसे imagine किया था कि 5 मिनट का सीन करके बाहर आके 1 मिनट का ब्रेक लेके वापस करने जाएंगे. But then we ended up running 15-minute long takes where I'd go through the entire action, and there was a lot of crying, breaking, screaming, and it was a lot. Let me also add this. You see, while they were shooting the freezer portion, I mean, there were quite a few people who fell ill, recovered, and all that. But Janvi fell ill, recovered. The director, Mathukutti Xavier, okay. He fell ill, he had just recovered from COVID. So the immunity was not that strong, which is the reason he got affected by the cold, the freezer shoot. And I think almost for 4 or 5 days a week, 6 days, he was, bedridden in the hotel. And then the doctor told him, you're not to enter the freezer. And since the doctor knows the film world, he said, you can see the monitor from outside. So he said, yes, I'll do that, I'll do that. And he stayed outside for precisely 10 minutes of the first day, and then he was inside the freezer. With a muffler, monkey cap. तो आपने भी स्टार होते हुए एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स को जिस तरीके से चैलेंजिंग रोल्स को लेना है, मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए थ्रिल और एक्साइटमेंट इसी चीज़ में है कि मैं अलग-अलग टाइप के फिल्म्स करूँ, अलग-अलग किरदारों को निभाने की कोशिश करूँ और उनके ज़रिए I can live different lives and learn new things and grow. And देखिए, स्टार वार बनना बहुत अच्छा है और उसमें मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन मुझे एक्टर बनना है और हमेशा से बचपन से यही ख्वाहिश रही है कि मैं एक्टर बनूं. और आई थिंक एक्टर बनने के लिए किरदारों को ईमानदारी से और सच्चाई से निभाने की कोशिश करनी चाहिए. मनोज जी, आपसे वो बहुत अप्रिशिएट की गई थी जी, और फिल्म का जो मेन फोकस था वो माँ बेटी के रिलेशन पर ही था जी. बिल्कुल, इसमें भी वैसा ही नजर आ रहा है. तो क्या आपको थोड़ा सा वो था कि कंपेयर होगा कि गुंजन? नहीं, इस तरह से देखिए, इस तरह से कभी कोई सोचता नहीं है. वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. पंकज त्रिपाठी जी वेरी गुड एक्टर, वेरी फाइन एक्टर. वो फिल्म भी मैंने देखी हुई थी और उसमें केमिस्ट्री कमाल की थी. बट जब आपको जब काम मिलता है तो आप उसको बिल्कुल अलग तरीके से अप्रोच करते हैं. ये सोचते नहीं है कि उससे कंपैरिजन होगा, ये उससे कंपैरिजन होगा. मैं एज एन एक्टर, मेरे को लगता है कि जब मेरे को ये फिल्म मिली तो मुझे आई वाज सो हैप्पी एंड आई सेड कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, इतनी अच्छी कहानी है
तो आई शुड पुट माई 100%, दैट्स इट, उतना ही सोचा. एंड आई वॉज विद द डायरेक्टर. मुझे लगा कि जो उनका विजन है उसको मुझे फॉलो करना है, और आगे पीछे उधर कुछ देख नहीं गया. आई वॉज देयर विद द डायरेक्टर. Hi guys, Himesh this side from Pahnकर. Hi, congratulations on the trailer first.